Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is overview of an instruction set of PIC microcontroller, that is PIC 18F XXXX microcontroller. In this session, I will explain you some important instructions. अब देखो exam point of view से आप question किस टाइप से expect कर सकते हो. Few instructions can be asked and it will be asked to explain these instructions, or the question may be related to the different addressing mode. Now before starting the actual instructions, let us discuss what is the meaning of instruction. In case of instruction, there are two parts. One is called opcode, second is called operand. Opcode means the thing which you want to perform, rather the task you want to perform. For example, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ MOV, it indicates that you want to move the data, you want to copy the data. तो जो ऑपरेशन करना है that is called opcode. Second, operand, मतलब किससे रिलेटेड ये ऑपरेशन करना है. You want to copy the data, that means somewhere data is stored and you want to take out that data, you want to copy that data to some other location. So that particular thing, मतलब किसके ऊपर ये ऑपरेशन करना है, that is called operand field. Now this is the list of some abbreviations, some letters which are used in case of opcode field. ये बहुत important है as far as the programming part is concerned, so do remember all these things. ये simple है as such. If notation F is there in opcode field, मतलब जैसे मैंने बताया एक इंस्ट्रक्शन में दो फील्ड है, फर्स्ट इज opcode, सेकंड इज operand. तो ये जैसे MOV एक एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड opcode. अगर इसमें नोटेशन F आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल MOVF, देन इट इंडिकेट्स द रजिस्टर फाइल एड्रेस. If notation W is there, it indicates working register or accumulator. If B is there, it indicates bit address. If notation K is there, K is called as literal field or constant value. D notation indicates it is destination. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर नोटेशन D है opcode फील्ड में, opcode मतलब फॉर एग्जांपल MOV, इसमें D नोटेशन है और D का वैल्यू अगर 0 है, इट इंडिकेट्स दैट रिजल्ट इज स्टोर्ड इन वर्किंग रजिस्टर. इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज वी वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें स्टोर करना है. दैट इज डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डी. इसका मतलब है डी का वैल्यू अगर 0 है तो रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन वर्किंग रजिस्टर. इफ वैल्यू ऑफ डी इज 1, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन फाइल रजिस्टर. देन TOS, इट्स वेरी सिंपल, इट इंडिकेट्स टॉप ऑफ स्टैक. PC, इट इंडिकेट्स प्रोग्राम काउंटर. TO bar notation, it indicates timeout bit. PD bar, it indicates power down bit, and this notation indicates register bit field. Now let us discuss the different types of addressing modes. So these are the 4 types of addressing modes. जैसे मैंने बताया, you may expect the separate questions like what are different addressing modes used in PIC microcontroller. So first is immediate addressing mode. It is characterized by letter L. इसका मतलब है opcode में letter L होगा. If you notice letter L, it indicates it is immediate addressing mode. In this case, source operand means this part. Source operand is constant and operand is also called literal field. Literal मतलब constant. It is not variable. Then it is used to load data into PIC register and working register. But this instruction, rather immediate addressing mode instructions, are not used to load the data, to copy the data into register files. So it is applicable only for PIC register and working register. WREG means working register. For example, MOVLW, ये जो यहाँ पे L notation है, it indicates it is immediate addressing mode. W मतलब working register. अगर इंस्ट्रक्शन MOVLW 0x30 है, इसका मतलब है जो 30 वैल्यू है वो हमें वर्किंग रजिस्टर में शिफ्ट करना है, मूव करना है. सेकंड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. Notation is F, rather it is characterized by letter F. So this is direct addressing mode, means 8-bit data in the RAM location whose address is mentioned in the instruction. इसका मतलब है जहां से डेटा हमें लेना है उसका एड्रेस मेंशन किया रहेगा इंस्ट्रक्शन में. सो 8-bit डेटा इज इन द रैम लोकेशन, मतलब डेटा रैम लोकेशन में और उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमें मेंशन करना है.
इट इज यूज्ड टू एक्सेस रैम फाइल रजिस्टर, जैसे हमने ये डिस्कस किया. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज नॉट यूज्ड फॉर रैम फाइल रजिस्टर, वेयर एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड to transfer to access the RAM file registers. Example is MOVFF0x30 port B. इसका क्या मतलब है? ये 30H पे एक लोकेशन है 30H, वहां पे कुछ डेटा स्टोर्ड है. दैट डेटा वी नीड टू मूव टू पोर्ट B. थर्ड, रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. यहां पे पॉइंटर यूज करते हैं, मतलब रजिस्टर इज यूज्ड एज अ पॉइंटर टू द लोकेशन ऑफ फाइल रजिस्टर. अगेन दिस इज यूज्ड टू एक्सेस द फाइल रजिस्टर, लेकिन रजिस्टर एज अ पॉइंटर यूज कर रहे हैं हम लोग. सो 3 फाइल सिलेक्ट रजिस्टर्स आर मेनली अवेलेबल. फाइल सिलेक्ट रजिस्टर्स आर एब्रिवेटेड एज FSR. दिस फाइल सिलेक्ट रजिस्टर्स आर FSR 0, 1, 2. अब ये जो फाइल सिलेक्ट रजिस्टर्स है, दे आर related to indirect registers known as INDF0, INDF1 and INDF2. अब देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इससे रिलेटेड. FSR जो है फाइल सिलेक्ट रजिस्टर इज ऑफ 12 बिट, whereas PIC microcontroller is of 8 bit microcontroller. So this file register data is split into 2 parts. Hence FSR is split into 8 bits, rather into 2 parts. One part will contain 8 bit like this. Fourth is index ROM addressing mode. Basically this type of addressing mode is used to access the data from lookup tables. Now let us discuss different types of instructions. To make the thing simple, I have categorized instructions into different types. For example, first type is data transfer instructions. जैसे as the name indicates, it is basically used to transfer the data from source to destination. That means it is used to copy the data. So the data can be transferred, moved or copied between working register, WREG means working register, and any other register. In this case, after copying the data, after transferring the data, the source is not modified. Source मतलब जहां से हम लोग data transfer कर रहे हैं, the source contents are not modified. Examples MOVLW0x20. अभी हम लोगों ने ये एड्रेसिंग मोड में डिस्कस किया. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ L, F एंड सो ऑन. W stands for working register. It indicates moving, that means load 20H, H is hexadecimal, into working register. Then move FW port B. It indicates moves or loads or copy the contents of port B into working register. Port B के content working register में copy करना है. Move FF 0x25, 0x35. It copies the file register 25H into a 35H. मतलब this is acting as a source. This value 0x35 is acting as a destination. Then next is push instruction. It is basically used. हाँ देखो ये push और pop instruction में operand नहीं होता है, only opcode is there. So this push instruction indicates pushing the top of stack. Second, fifth pop operation. It is similar to the push operation. It is related to pop up the top of the stack. Next type of instructions are arithmetic and logical instructions. As the name indicates, these instructions are related to certain arithmetic operations as well as logical operations, means AND operation, XOR operation, XNOR operation and so on. अब देखो, as far as this PIC microcontroller is concerned, it supports addition and subtraction arithmetic operations. मतलब दो टाइप्स के operations हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. Rather, I am talking about arithmetic operations. These are addition and subtraction, and the indication of these operations is given by the file register. ये जो operations है, arithmetic operations and logical operations, these operations can be between W and F, मतलब working register and file register, or these operations can be between working registers and literals, that means some constants. तो जैसे ये वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट और फाइल रजिस्टर के कंटेंट के बीच के ऑपरेशन है, इट कैन बी अर्थमेटिक और इट कैन बी लॉजिकल ऑपरेशंस. देन रिजल्ट्स will be stored in either W or F.
that depends on value of D। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, D एक नोटेशन है, ऑपकोड में यूज करते हैं। अगर D 0 है तो वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन वर्किंग रजिस्टर। इफ D is 1, value of the result will be stored in file register. But if the operation is related to working register and literals, then the data, I mean result is by default stored in working register. Examples: add LW 0x30. It indicates contents of working register are added with literal 30. ये जो 30 वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ जो वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स है उसका एडिशन हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन वर्किंग रजिस्टर। ऐसे याद रखना है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, दैट विल बी बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड इन वर्किंग रजिस्टर। देन एड WF 0x25 0 और 1। देखो ये D का वैल्यू है, स्मॉल d का वैल्यू है, सो इट इंडिकेट्स एड WF मींस एड कंटेंट्स ऑफ वर्किंग रजिस्टर टू 25H, कंटेंट्स ऑफ 25H एंड स्टोर द रिजल्ट इन W वर्किंग रजिस्टर, क्योंकि D का वैल्यू 0 है। सेम इंस्ट्रक्शन इफ वैल्यू ऑफ D इज 1, सेम add contents of working register W to 25H and store the result in the file register 25H. Then subtract LW. Similar to addition, subtract contents of W from literals. Then subtract WF, subtract working register contents from a file register. फिर से ये रूल अप्लाई करना है, D का वैल्यू अगर 0 है तो वर्किंग रजिस्टर में रिजल्ट स्टोर करते हैं और D का वैल्यू 1 है तो फाइल रजिस्टर में स्टोर करते हैं। देन लॉजिकल एंड ऑपरेशन, दैट इज एंड LW एंड लिटरल्स। L मींस लिटरल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू विथ W वर्किंग रजिस्टर विथ कंटेंट्स ऑफ वर्किंग रजिस्टर। एड WF same as above, add working register contents with file register. Again depending on the value of D, the result will be stored either in W working register or in file register. Then XOR LWK, that is exclusive or operation of literal, that is K is the notation for literal K with working register W, and XOR WF, that is XOR exclusive or operation of working register and file register contents. Next type of instructions are bit manipulation instructions. अब जैसे देखो इसके बाद के जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, आई एम जस्ट राइटिंग ऑपकोड, आई हैवंट रिटन ऑपरेंड. So as the name indicates, the bits of the file registers can be changed. That means these bits can be set, can be cleared or can be complemented. Examples are BCF, bit B. We already discussed the notation, meaning of notation B used in opcode. It is basically the address. So bit B in file register, address which is in the file register. So bit B in the file register is cleared. That means address in the file register is cleared. BSF, bit B in file register is set. That means address in the file register is set. Then BTG, bit B in data memory location is inverted. Then swap means we know that the things are interchanged. So swap F, interchange lower and higher order nibbles. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस. ये बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस है. हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेटस रजिस्टर और मींस फ्लैग रजिस्टर डिस्कस किया है. सो इफ द ऑपकोड इज BCL1, दैट मींस ब्रांच टू L1. L1 कुछ एक सब रूटीन है, वहां पे ब्रांचिंग ऑपरेशन होगा. प्रोवाइडेड दैट कैरी फ्लैग, CY मींस कैरी फ्लैग इज इक्वल्स टू 1. BL मींस ब्रांच इफ N is equals to 1. N is negative flag 1 होगा तो ब्रांचिंग ऑपरेशन होगा. BN1 नेगेटिव फ्लैग 0 होगा तो ब्रांचिंग ऑपरेशन होगा. BNZ दिस इज रिलेटेड टू 0 फ्लैग. सो Z is equals to 0 फ्लैग अगर क्लियर है मतलब वैल्यू 0 है, देन द ब्रांचिंग टेक्स प्लेस. इफ इंस्ट्रक्शन इज BZ, इट इंडिकेट्स दैट द Z फ्लैग, आई मीन 0 फ्लैग इज इक्वल्स टू 1. Then BOV, it is related to overflow flag. So BOV is the instruction whenever overflow flag is 1. BNOV is the instruction whenever overflow flag is 0. BRA, this is the branching instruction which is basically unconditional branching instruction. Now last type of instructions are call and return instructions. देखो मैंने सिर्फ important instructions clear किए, बाकी जितने भी instructions है
वो हम लोग डिस्कस करेंगे while writing the actual coding, I mean while developing actual coding or while writing the programs. So one instruction related to call and return. देखो call and return instructions are basically related to calling the subroutine as well as returning from the subroutine to the main program. So two important instructions are there. rcall, it is a 2-byte instruction which is used to transfer control to the subroutine, and rreturn, as the name indicates, एक बार कंट्रोल सबरूटीन को गया है तो उसके एंड में अगेन द कंट्रोल शुड बी रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम. सो दैट इज डन बाय यूजिंग रिटर्न इंस्ट्रक्शन. सो इट इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ सबरूटीन व्हिच इज कॉल्ड through rcall instructions. So as I said, I have just covered some important instructions. So that's it for today's session. So thank you. Thanks a lot for watching this video.